Let's talk about protein for a bit. It is still very common in India to see protein as a bodybuilder supplement. But that's not right. Protein is not just crucial for muscle building and recovery, but for overall health, immune function, and energy levels. In our busy lives, getting enough protein via food can be very tough. That's where Muscle Blaze Biozyme Performance Whey comes in. India's #1 whey protein, trusted by over 6 million plus customers. Each scoop gives you 25 grams of quality protein. Their patented EAF technology ensures superior digestion and absorption without any bloating issues. It's available in multiple flavors and free from heavy metals, preservatives, pesticides, and artificial flavors. This is also the most internationally tested and certified whey protein. Add Muscle Blaze Biozyme Whey to your routine for a convenient and effective way to hit your protein targets. Use my code PGMB for the best discount on muscleblaze.com. Okay, ladies and gentlemen, welcome. Today we are going to try something very interesting. Mere old subscribers, people who followed me throughout the journey, they know what I'm going to do. I get in front of a camera, I open a mic and I talk about things that interest me. I talk about... Actually, इसमें हम काफ़ी personal experience की बात करेंगे, but what I've realized I'm good at is I can take an experience and pull out philosophical and psychological threads that inform my behavior and then maybe even talk about it because I'm partly gifted with language. So for the new subs who do not know what I'm good at, apart from asking stupid questions, this is some monkey stuff that I can manage to do. And so I want to talk to you about today. We'll do a solo conversation and I want to talk to you about my trip, my travels. हर trip के बारे में बात नहीं करेंगे, but this trip is kind of interesting. I spent about 35 days, about 5 weeks in North America. And I've lived in New York City for 6 years, so I have history there. But this trip was very interesting. I did not know going into this trip that this trip will be this interesting. And so I have a lot of lessons to share from this trip. Stuff that I've learned for myself, and I'm pretty sure for a lot of us will be either the first time or the 5th or the 6th time hearing the same stuff. I think it's somewhat my moral obligation to talk about it. I think a lot of young people who follow me, a lot of older people also who follow me, they'll be better off being taught or reminded this stuff. And also what I want to do is talk about the experience, the story part of it. I want to tell stories about this journey because this trip was so novel. ऐसा by handful लोगों को ऐसी experiences मिलते हैं, right? And through that, what I want to do is sort of enhance the imagination of the average podcast listener in India. We know our demographic, we know who's listening, and we know also roughly where they're coming from. And it's a very fast-moving India you're a part of. This ship is moving fast. And if through my experience, some people can live vicariously, people have done that through vlogs and streams I've done in the past, but also enhance the spectrum of imagination of what is possible. Bro, we've got something cooking. Lastly, I want to talk about a surprise guest that I'm having on the show. And I'm excited as hell for this one. Like, I cannot overstate how happy I am about this. And we'll come to talk about it. I'll get pretty riled up and emotional about this guest and what it means for me as Prakhar the individual, not Prakhar the creator. And traveling in your 20s is simpler, right? You're either alone or with a gang of boys, right? Goa trip ban gayi to ban gayi, nahi to akhele. I've traveled alone a lot. Like most places, most traveling I've ever done is alone. And it's cheap. You know, you're backpacking. You are taking tiny buses that fit you. You're traveling in general compartment train, right? You're staying at hostels, right? It's a very different kind of travel. And I've always also managed to earn great friends. Like there was a whole period 2017 से या 2018 early से rather 2020-21 तक जब मेरी सारी flights United States में free थी. I would fly between India and the US and US and India for 15,000 rupees. And I'd get premium economy. I wouldn't get anything better than that, but premium economy, I was guaranteed a seat for 15,000 rupees. मैं पूरे अमेरिका में कहीं भी जा सकता था $100-200 के लिए. मैक्स सिर्फ टैक्स देना पड़ता था. सिर्फ टैक्स. And I did a lot of traveling like this. I had a lot of friends who'd let me stay at their places and a lot of friends who had access. Right? This is one of the things I want you to think about. Friends who have access, who want to do you well, will get you all these experiences and all these connections and all these ideas that you would not normally have. And I had a lot of that. I had very high achieving friends. Right? I had friends in the right places. And so things worked out in this way. But I found that now that I'm almost 30, travel looks somewhat different.
And what I mean by that is, as I'm growing older, some of the interests that I used to have, जैसे अकेले travel करना, I mean, I'm close to having a partner now, right? So like I have to travel with a woman. या for that matter, मेरे को हॉस्टलों में रहना, मेरा मन नहीं करता हॉस्टलों में रहने का, या मेरे को बसों में ट्रैवल करने का. I'm not excited about it. I'll do it, but I'm not excited about it, right? And I think age, money, experience, success, they kind of start changing your orientation towards things. So traveling in my 30s, I've found is very different. This was a clean break from all the travel I've done before. बड़ा अलग एक्सपीरियंस था. इससे पहले तक मेरी जवानी वाले ट्रैवल थे, अब मेरे नए बुढ़ापे वाले ट्रैवल निकल के आ रहे हैं, और वो दैट क्रिएट वाज समथिंग ब्यूटीफुल. वील टॉक अबाउट इट इन जस्ट अ सेकंड. आई वांट टू ऑल्सो give a little background on me as an internet idiot, as an internet clown. I used to be a hobby talker. When I started during COVID, I was a hobby talker. I talk about philosophy, psychology in the same way that you'll see me talk about. And I only transitioned into being a career creator between 2022 and now. 2022 towards the end, I was like, you know what, let's take it seriously. Let's build on this. And it's an interesting shift because I went from having fun and making like decent money to, you know, pay for myself, to then wanting to build a business at scale, to wanting to communicate at scale. And my old subscribers know that that shift is interesting to you, I know. But to me personally, it's a very interesting shift. Because now when you're trying to operate at scale, right? तुम सिर्फ बैठ के यहाँ पे अकेले बात नहीं कर रहे. You need money to run a business. And you need purpose to keep going. And even though now I can say that I'm doing fairly well thanks to you guys pressing the subscribe button. Thanks to you guys watching all the interesting stuff, all the entertaining stuff that I'm putting out. The purpose angle I hadn't solved for yet. And it's not, purpose is not also, मेरे को लगता नहीं है कि आप उसे काम पे बैठ के solve कर सकते हो. When all my industry friends talk to me about exploration and being stuck and so on, I always tell them, bro, you need to go out and go get adventures under your belt. You need to go out and experience the world. Mumbai, Delhi, Bangalore, Raigad, Rajgarh, Rampur, whichever city that you want to imagine, wherever you're from, whatever your context is, very limited. करोड़ों हजारों रंग हैं, उसका सिर्फ एक स्लिवर हमें एक्सेस होता है, चाहे हम कहीं पे भी रह रहे हो. और इसीलिए get explorations, adventures under your belt, they open your mind up and you think very differently. And I think purpose is a function of that. I think purpose is a function of journeying through the world. And इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है मटीरियल कि मैं फ्लाइट लेके यहाँ चला जाऊँ. I've talked about Vipassana quite a lot. I've spoken about Vipassana quite a lot. And Vipassana is a journey inwards. You go into that stillness, it will do something to you. You get into a bloody breakup, it will do something to you. The world is experienced. Adventures are occurred. Explorations are had, and that changes the way you interact. It changes the way you interact with yourself. And from there, new dimensions come about. And purpose is kind of पूरा अपने आप में एक नया dimension. And I had some interactions with purpose on this trip. It's very interesting. I didn't think it would be like this. You know, for a long while since I started running this business, and it was about money and scaling and, you know, hard material, numerical sort of statistics. I didn't think कि एक intangible component है जो इन सब चीज़ों को tie करता है साथ में. कि एक कुछ ethereal है, कुछ, you know, the simple word for this in Indian podcasting lingual gymnastics is spiritual है कुछ. Something beyond what you can hold as tangible. That ties all of these things together. And I had some interactions with that I want to talk about and hopefully, you know, help you reflect on it. And so on this trip, I was in America for 35 days. I spent 6 years between 2017 towards the end to 2023 towards the end. I went to school there, school as in college. And then I worked for a little while in America as a tech guy, customer support. But I left in 2023 because I'd run out of money. All the money I'd made using content, I'd run out of it. And there was एक साल पहले exact, in fact, October 2023, I had zero money left in the bank. मैं सितंबर में मूवी इसलिए गया था क्योंकि मेरे को पता था पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं सैलरीज दे चुका हूँ, I have cleared my debts and so on, and I don't have any money left, and I can't sustain a rent or like a life in New York. It's very expensive. So I came back for that, and I went back this time with some success and financial comfort in the bank. You know, so it was almost psychologically like going back to
my home of my youth, but as a winner, when in fact I'd left it thinking as a loser. In my head, I was like, you're losing and therefore you're leaving. And now I'm coming back as a winner. So it was a very interesting psychological play like that. And I spent 35 days between first New York, about 10 days in New York, then a week in LA. I spent a week in Mexico from there. I'll talk about where I went in Mexico, because Mexico's wilding. Brother, what are you doing? We never get taught anything about that part of the world. South America, Central America, we get taught nothing. And that place is wilding, like wilding. Yeah. And from Mexico, I went to San Diego for a music festival. From there, slowly coming back via LA, right? And I did this in some part to take a break. Some part to claim my past back, like I said, right? Going back as a winner. In some part because I miss my friends. I grew up around them. मेरी 21 से 27-28 तक की जो उम्र है वो निकली वहाँ पे है. मेरा सोचने का तरीका, मेरे associations वहाँ पे हैं. And some to explore, right? Just some to explore. And so, I'll walk you through some stories. I'll walk you through some very interesting events that happened, very interesting people I met, and I'll try and tell you exactly what was happening in those moments where I was like, bro, listen, ये क्या कमाल चीज़ सीखी, ये कैसे mind shift हुआ. I went to New York City. And I do this thing, bro, where like, I'm going to all the places I used to live at. Like मेरे 2-3 अपार्टमेंट थे over periods ना. मैं जिन जगहों पे वॉक किया करता था, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, I go back to the university. You can't enter the university anymore because security is tight because of protests happening all the time. But I managed to get in. I'm going through the same places जहाँ से मैं खाना खाया करता था. And I'm going there and I'm trying to feel like, भाई हाँ हम कभी फुटबॉल खेला करते थे. I'm trying to go at that nostalgia. Right? Like I'm trying to juice that nostalgia. ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ जाके सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये भी दिन थे. और मेरे को लगता है थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो फरीदाबाद को देख के भी ऐसा ही बोलूंगा. बट लाइक आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद इट ऑन दैट लेवल एंड नथिंग्स हैपनिंग, नथिंग्स अपीयरिंग. इट्स स्टिल ग्रेट टू मीट माई फ्रेंड्स, स्टिल इंटरेस्टिंग टू सी द कॉमर्स, द लाइवलीनेस ऑफ दोज प्लेसेस. इट्स वेरी इंट्रीगिंग टू बी लाइक, भाई यहाँ कौन सी क्लास चल रही होगी, ये लोग क्या सोच रहे होंगे, इधर क्या होता होगा शाम को 7 बजे. वो सब बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग है, बट इट्स नॉट द सेम एज बिफोर. इट्स नॉट वॉट इट यूज टू बी. एंड फ्रॉम देयर समथिंग स्टार्टेड क्लिकिंग कि you are also not the same person you were. Your concerns with this place is not the same. तुम्हें उन्हीं जगहों पे नहीं जाना, तुम्हें वही चीज़ें नहीं करनी. And what I came up with is this articulation, this idea that there are phases to life and it's okay. Some things just get left behind. कुछ चीज़ें यादें बन जाती हैं और वो यादों में ठीक है. ज़रूरी नहीं है तुम उनको खींच सको और वहाँ फंसे रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है. इसका एक प्रोग्रेशन और होता है अपने आप, which I start thinking about it, right? Because I'm finally resting after 2 years of working hard, you know, going from having some success to zero success, having zero money at a certain point, then building it up, building a team. Now I have a team of like more people than I can count, right? Having warriors with me on this adventure to build a great conversation platform for this country and its entertainment and its education, right? I have a team now. Things are working. The machinery is set. एक point था जब ये नहीं था. I was very stressed through that point. And I lost a lot of mental peace. I gained a lot of things, but I lost a lot of mental peace. I lost a lot of health. I gained a lot of weight. I lost a lot of agility and intensity. I used to look fine. That's what I'll say. I look fine, but I used to look fine. Right? My performance was better. I was not as tired through the day. I was not as hungry through the day. I was not as anxious through the day. I was always anxious. 2022 से जब से I was like इसको करियर बनाना है और वो फिगर आउट नहीं हो रहा और हम मेहनत कर रहे हैं, I was very anxious. And now that stage 1 is complete, I need to get into stage 2. That's what I realized. I was like, अगर लाइफ में फेजेस हैं प्रखर, तो हम किस फेज में, और अगर हम इस फेज में हैं तो अब क्या हो चुका है, और अब ये हो चुका है कि गाड़ी चल रही है, अब हमें बड़ा सोचना है. Now we have to get into dream big mode. And it's fine कि पहले ऐसा था. इट्स फाइन. आपको स्ट्रेस लेना था, आपको चीज़ें सीखनी थी, आपको इंटेंसिटी और ग्रिड सीखनी थी, आपको मेहनत सीखनी थी, आपको फोकस सीखना था, आपको लोगों को साथ लाना सीखना था, आपको जिस प्लेटफॉर्म पे जो धंधा कर रहे हो वो सीखना था यार. सबको ऑब्वियस नहीं होता. तुम्हें नहीं पता कैसे चलता है, ये नहीं पता होता लोगों को. इट्स अ वेरी, अपने आप में जानवर है ये यूट्यूब. इट्स अ मॉन्स्टर इन इट्स ओन वे, राइट? But now I'm in a different phase and I need to acknowledge that and act on it. Number 1, for instance, what I have to do is fix my health. I expect myself to be what? Compete globally. International tier
influencer. And I insist on the word influencer because my job's to influence you in at least somewhat the right way. Bhaad mein kya content creator? Too humble. I expect myself to compete globally in the competition for voice and messaging. And so, bro, I can't live like this. So it was like such a sudden realization very early on. I was like, I can't do this. I don't feel great. I don't sleep as well. And there is a distance between who I think I am and how I'm behaving. This is a big one. Ki tum bol rahe ho that you need to fix your health, but you're not behaving as such, and do something about it. Right? I also need to be in my best zone psychologically. I need to be relaxed. Varna, ideas don't appear as well. You're not able to have that conversation as well. If you're always worried about outcome, you're not having as much fun, Prakhar. At this point, what I need to do is content that is pushing what I've managed to do before. At least mere liye it should be some kind of self-expression that borders on hell yeah. Ye kara, maze aaye. And so for that, I need to be in the best zone. I can't always be anxious and my health needs to be better. And I'm okay carrying the memory of how hard it was. That's a great lesson. I would not trade that for anything. The first 2 years of my career, I would not trade for anything. इतना सीखने को मिला है. In fact, thank God सीखने को मिला है. Tough था, but कोई नहीं. चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा. It'll make me indestructible. You can throw me down to zero. I'll climb back up again. मैंने एक बार बोला भी था ये, अब मैं prove भी कर सकता हूँ. Right? I always thought I could. Now I know I can. What are you going to do about it? And that changes everything. That kind of mental fortitude changes everything. You can't take me out. And I wish my friends had that. You know, if they have it, I wish they had it more. Because that's an outstanding quality in a person. You look at him, you're like, man, you're my guy. Right? So, there's that. And iski na there was this picturesque verbalization. एक metaphor है जो visual है. ठीक है, and I remember I'm standing in Washington Square Park near NYU. I go there quite a lot to play chess. Some of my friends do activities there in the park, and so I'll just go to hang out. और वहाँ पे एक fountain चल रहा है और right there is the fountain's flowing, and I have this thought where I'm like, up until now you've swam against the tide. Now swim with it. Like पहले you are going against the flow. You're making the impossible possible. Now find a way to use this flow, this momentum. पहले मोमेंटम अगेंस्ट है कि नहीं चलेगा, अब चल रहा है, अब इसके साथ भागो. इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. आई एम नॉट कंप्लीटली एबल टू आर्टिकुलेट, बट इट हैज डन सम सिम्टोमैटिक चेंजेस टू मी. फॉर इंस्टेंस, आई एम लेस स्ट्रेस्ड अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. बीच में आई वाज स्ट्रेस्ड अबाउट एवरी स्मॉल थिंग यार. मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता, तो मैं थोड़े पर्सनल हो जाएंगे. हर चीज़ की टेंशन यार, पता ही नहीं चलता. पता है, मैं एक बार बोली थी मैंने बात कि फिक्र और डर आदत है. और मेरे को ये बात पता थी, बट अपने में देखा मैंने वापस 2-2.5 साल बाद कि फक यार, हाँ, फिक्र और डर तो आदत है यार. हर चीज को छूटते ही उसके नीचे डर लगता है. 2 आदमी जंगल में चल रहे होंगे, एक आदमी नहीं सोचेगा ना सांप है, दूसरा आदमी सिर्फ ये डरता रहेगा कि हर झाड़ी के पीछे सांप है. और वो 2 एटीट्यूडनल डिफरेंसेस हैं. फैक्चुअली द सिचुएशंस आर द सेम, बट एटीट्यूडनली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड इन वॉर टाइम, श्योर, if you're walking through a forest infested with snakes, sure, think about it. But you cannot flow with the current if you're not willing to sort of trust. If you're not willing to let go and relax around small things. And that changes the way I interact in my conversations. You will come to see. You'll see the बात करने का तरीका बदल जाएगा भाई. मैं already feel कर सकता हूँ, मैं 2-3 podcast record कर चुका हूँ. I have a more peaceful relationship with food. And by that I mean I've been trying to run this hack in my head where I'm like, जब भी भूख लगे बोलो बढ़िया है, भूख लग रही है, अच्छा है. Because eventually dropping extra weight boils down to food. Exercise तो मैं कितनी भी कर सकता हूँ, effort डालने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. It is the rejection of something that is a bigger problem with me. Saying no. But I just started training myself. भूख लगती है, मेरे को लगता है वो भूख लग रही है, मैं कहता हूँ बढ़िया है, good, शाबाश. That's how I talk to myself. It's kind of funny, but that's how I talk to myself. I'm like बढ़िया है, good है, भूख लग रही है. Right? And जब ये स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों का गया ना,
what I automatically could do was now focus on smaller things and details. I was like, मेरे को ये detail fix करनी है. I want to change this, and you'll start seeing this in the studio setup. You'll start seeing this in the channel के organization of thumbnails, etc. I'm much more interested in these finer details now. Now that I know the conversation's good and I can relax, all these tiny things I want to change about myself. And what I'm trying to get at here is, as soon as you are able to let go of fear, doubt, stress, जो accumulate हुआ है, where you're able to understand कि bro, now it's time to let go of this. एक टाइम पे हेल्पफुल था, अब नहीं है. कई लोग नहीं स्विच ऑफ कर पाते, मैं नहीं कर पा रहा था. You're able to focus on a lot of other things. Your mental bandwidth becomes freer. That's what I realized, right? And I'll tell you the most magical thing that's happened throughout this. It's very strange. I didn't know this. अगर आपने मेरे कोई भी पॉडकास्ट सुने हो, परमीश वाला सुना हो आपने, जसप्रीत वाला सुना हो आपने, you'll hear this recurring theme before this trip where I talk about my parents growing old with this sort of ache in my heart. कि bro yaar shit, right? And it was an anxiety, like it's a concern, it's a valid concern all of us have, right? ये एक बड़ा valid concern है, but वो जो चिंता थी ना, वो उस tragedy के साथ जो एक psychological obsession बन गया था, that had something to do with that anxiety of worrying about everything. मतलब मेरे हाथ में क्या है? I can love them, I can spend a lot of time with them, and that's eased me here. It's eased me here also. Like when I'm hanging out with my parents, I'm not thinking of this, it's not, I'm much more there. ये crazy realization थी कि प्रखर एक phase खत्म हो रहा है लाइफ का. और फिर उसके बाद ख्याल आया कि यार ऐसा phase क्यों था, मैं इतना tense क्यों था, और फिर मेरे को पता लगा आर्क होती है यार. एक स्टोरी का एक हिस्सा होता है, वो स्टोरी का हिस्सा था तुम्हारा, बहुत कुछ सीखे, याद लेके चलो साथ में, पर अब नए बनो, become something new. A new phase is demanded of you. And I wrote this out. I'll tell you a little bit more about it. Number 2, and this happened in New York very early on. I am going around spending money in New York after having recovered from what I like to think of is a money wound. Money wound is an interesting concept I learned actually from Rajiv Talreja. Rajiv Talreja, for people that do not know, is a business coach and very interesting person to hang out with. I've probably met Rajiv for a few hours over 2 days in Bangalore once many years ago. And, I went to his home and I was privileged enough to have a conversation with him one-on-one, and he mentioned this idea called money wound. Okay? And I didn't know what to make of it. I was like, money wound, this sounds very like astral, right? But it's not astral. It's, what I realize is actually एक inherited scar होता है पैसे के साथ. वो circumstantial होता है, कभी कभी familial होता है, कभी कभी बचपन से होता है, कभी कभी acquired होता है, but हो जाता है. और वो मेरे को हो गया था. And I realized this because I'm trying to spend money. I'm trying to redecorate my studio, right? I'm trying to do all these things and I'm so tense about like, oh, खर्चा, right? And I'm like, ये क्या हो रहा है? And the psychological reason when I थोड़ा सा मैंने dig किया, I was like, ये क्यों हो रहा है? Is because that memory is very alive. Last October when I remember crediting 24,000 rupees to somebody and it said 11,000 rupees left in the bank. And I'm like, भाई मैं सैलरी कैसे पे करूंगा यार? मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आके पैसा आना शुरू हुआ है, राइट? अप्रैल, मई, जून, उससे पहले तक वी वर हैंड टू माउथ ब्रो, लिटरली कि इस महीने फोड़ेंगे तो अगले महीने के एंड पे वो दे पाएंगे, रेंट दे पाएंगे, चीजों का खर्चा दे पाएंगे. मतलब 4 लोगों की टीम मैनेज करना was taking up the entire month worth of effort. Like if somebody's been watching for a year, I remember talking to Lakshay. Lakshay Chaudhary, by the way, shout out Lakshay. I remember talking to Sphinx. I remember talking to Ishita. Like there's all these guys coming on the show, and we are hoping कि इसका revenue से we'll be able to make payments for months, and that stress is insane. And I'm lucky. Very lucky, very privileged that my family does not require me to make money immediately, right? They are secure. That money is not for my family. But to watch your bank slowly lose money, slowly go from something to zero, as a young career है मेरा, is not easy. To let go of people because you don't have money to pay them is not easy. किसी का करियर है भाई, किसी का घर चल रहा है, मेरा तो चलो हो जाएगा सॉर्ट. तो भी तुम अपने आप को कैसे देखते हो जब तुम फेल हो जाते हो यार?
कितना भी पैसा हो किसी के पास, कितना भी सिक्योर हो कोई। मैं ये मेंशन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का तो और एम्पलीफाइड स्ट्रेस है ना पैसे के साथ, मेरा उतना नहीं है पर है। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ डिफरेंटली यार। यू स्टार्ट इन्वाइटिंग, मनी इज रिसोर्स, मनी इज पावर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। यू स्टार्ट थिंकिंग भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, व्हाट इज इट दैट्स नॉट क्लिकिंग। एंड सो लाइक आई एम हैविंग दीज थिंग्स इन माई हेड थ्रू आउट दिस पीरियड, और उसका ना एक accumulation, it creates a scar. And I'm realizing that scar now that some success is reached, some financial comfort is achieved, and I'm trying to spend that money that I've made. I'm like, and sometimes I'm not even trying to spend it, I'm trying to invest it. Forget that. Actually, let me redefine that. I think all money that I'm spending at this age, if I'm careful, is investing it. कुछ गलतियों से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आ जाएंगे, कुछ गलती करी, अरे यार यहां पे 25,000 रुपए ज्यादा दे दिए, समझ में आ जाएगा भाई। या कुछ डायरेक्टली आप एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हो ना, आप फ्लाइट खरीद के अमेरिका जा सकते हो ना, आप फ्लाइट खरीद के साउथ अफ्रीका जा सकते हो ना, वहां पे 50 आदमी से मिल सकते हो ना, वहां 28 टाइप की चीजें कर सकते हो ना। वो कितना स्ट्रॉन्ग आरओआई है उसका मेरी जवानी में, तुम्हारी जवानी में। And I'm so held back with it. So held back, I don't want to make a mistake. And I'm thinking I can solve this problem of not making a mistake पीछे से, action लिए बिना, खर्चा किए बिना. And I was wrong. You have to be easier with money. You can't be that held up about it. That's what I realized. It's sort of allowing or relaxing into the idea that more will come. If you're going to work hard and you're going to do your best job, money will find its way. इसको abundance कहते हैं, right? है ना? You've heard of this idea. इसको abundance कहते हैं. You're like, आएगा और कोई fight नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. हम काम अच्छा करेंगे क्यों नहीं आएगा? And what I've realized after doing this is, जब मैंने खर्चा करना सीखा, I was like, जा रहे हैं, दिमाग मत लगाओ. And I've lived this, but this was very interesting because I did not have an injury before. It was not the same phase before. I realized कि I just lightened up. एक burden उठ गया, थोड़ा relax हो गया, और ऐसा नहीं हुआ कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए. जो डर है ना आदमी को कि मैं ज़्यादा खर्च दूंगा, कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, कि खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ. That didn't happen, but I just felt lighter. Plays into the idea that my mind was freer to accommodate more details, get more creative with what I do, have more fun with my time. And New York City was very interesting like that. I can go on about just what all New York taught me. Like just going back home, what it means for your past, or what it meant for my past. After this, I fly to LA. And LA में मेरा best friend रहता है. My best friend, at least in America. कहीं वो लिख दे कमेंट में नीचे, मैं तो इसका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, इसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता. But I think he's my best friend. We are brothers and we are tied in a very beautiful way, क्योंकि जितना वो ambitious है उतना मैं ambitious हूँ, और जितना वो मेहनती है उतना मैं मेहनती हूँ, और जितना मेरे को लगता है लाइफ में वो करेगा उतना ही मैं करूँगा. Like we are, I feel like our journeys are tied in a way. His name is Hardik Tuteja, for somebody who spotted him on my Instagram. He's the coolest. Bro, I'm not joking, man. I'll tell you about LA in just a second, but let me tell you about this guy. Oh my God. मैं इस बंदे को 10 साल से जानता हूँ. 10 साल से तो मैं क्लोजली जानता हूँ. उससे पहले से हम स्कूल में तब से साथ में हैं, ठीक है. तो मैं इसको बचपन से जानता हूँ, और ये हमेशा ही इज़ बीन ऑन द कूलर साइड ऑफ थिंग्स, राइट. बट ब्रो, मैं इसके पास लास्ट ईयर भी गया था, 2023 में सितंबर में. मैं 2024 में सितंबर में गया हूँ, और इस आदमी का ना ऑरा समझते हो ना, हिज पावर, हिज एनर्जी इज 100x. Like I tell my friends when I'm telling them about this experience, like when I'm talking to these guys or somebody, I'm like, bro, think of the top 10 people. Do this right now. Think of the top 10 people you know who have aura, who you personally know. Top 10 people who have aura. Add that aura. It's still a fraction of the aura my friend has alone right now. It's insane. It's insane. The guy is, well, almost 6 feet, ripped. पैदाइशी रिप नहीं है, मेहनती रिप्ड है, राइट. लॉन्ग हेयर, फोटो डालना है उसकी यहाँ पे. लॉन्ग हेयर ऑल द वे हियर, हैंडसम एज हेल, ड्रेसेस अप ब्यूटिफुली, टॉक्स इन द मोस्ट चार्मिंग वे. लाइक वो रूम में घुसता है, एनर्जी इज पुल टुवर्ड्स हिम. ऐसा लगता है वो घुसा, भाई लोगों को उससे बात करनी है ब्रो. एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ही इज मैनेज टू क्यूरेट बिकॉज ऑफ इट, द काइंड ऑफ पीपल ही नोज, द प्लेसेस ही हैज एक्सेस टू, जस्ट बिकॉज ही हैज ऑरा.
is insane. मतलब मैं आज से सोच रहा भाई प्रखर और तो है अपना, but no comparison. And imagine saying this about a friend you've known forever. कुछ नया ही हुआ होगा, वरना मैं लास्ट ईयर भी ये बोल सकता था उसको. But I'm telling this to you now and today, like it's a different ball game. I was shocked. कितनी इंस्टेंसेस मेरे दिमाग में लेजिटिमेटली ऐसे मैं बैठा और मैं कह रहा हूं भाई ये कहां था, ये कौन सा आदमी है. इट्स दैट क्रेजी. द शॉकर हियर इज हार्दिक का बिजनेस अभी शुरू हो रहा है. ही इज बिल्डिंग इट आउट. ही इज बिल्डिंग इट आउट फ्रॉम स्क्रैच एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी बिजनेस. देयर इज नो बिजनेसेस लाइक दैट जिसमें उसे पता है कि भाई श्योरली पैसा तो बन ही जाएगा. ही इज ऑपरेटिंग ऑन वेरी टाइट कैपिटल एंड ही इज डूइंग अ वेरी डिसिप्लिन्ड जॉब एट इट. ही इज इन अ स्ट्रेसफुल प्लेस इन लाइफ. More stressful than mine for sure. I am doing much better. I have more material success. I have more money in the bank. I have more success to me. I have more people watching me. I have more people betting on me. उसके लाइफ के circumstance ये नहीं है, but वो ये है. And it's such an interesting thing to observe. I can go on and on talking about him, and at some point when he's here, maybe we'll have him on the podcast. Although I found people who are actually cool can never verbalize why they're cool. In that way, they're very uncool. But there's something about him. He's magic and I'm glad I have him as a friend. मैं उससे इतना सीखा हूँ ना इस ट्रिप पे, इतनी बातें उसकी लगी हैं. तुम हो सकता है अभी हम आगे भी बात करें. A lot of it comes back to what I learned from him. But there's one specific thing he told me one night. मैं और हार्दिक बैठे हुए हैं. We are in Mexico somewhere. And we are having this beautiful moment. It's like 3 a.m. We are sitting next to the ocean. In my, जो मेरा Airbnb था in Puerto Escondido करके. I'll give you a little more detail on this. Yeah, let me try this again. जो मेरा Airbnb था पोर्टो एस्कोंदिडो करके एक टाउन है, एक बीच टाउन है, वहाँ पे ब्यूटीफुल विला, पूल है और पूल एक्सटेंड हो रहा है आगे पैसिफिक में. राइट, वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू इट. 3 बजे सब सो चुके हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टफ एंड ही सेज समथिंग लाइक, यार तू ना बहुत सोचता है. यू नीड टू स्टॉप चेजिंग थिंग्स इन लाइफ. यू आर टू वरिड बिकॉज यू आर चेजिंग, यू आर टू वरिड, यू नीड टू अट्रैक्ट. एंड ही सेड दिस, अट्रैक्ट डोंट चेज. एंड आई वाज लाइक व्हाट, सच अ स्ट्रेंज आइडिया. क्या मतलब अट्रैक्ट डोंट चेज? If anybody knows my history and how sharp I am with ideas like this, you know I don't eat this up nicely. I'm very resistant to this stuff. But now this visible wonder is saying this to me when I'm in clear awe of him and what he's managed to build for himself in here. And I'm like, what do you mean by that? एंड देयर वाज अ फॉलो अप कॉन्वर्सेशन. हम उसके बाद बात कर रहे हैं, 3 बजे अकेले बैठे हुए सब सो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं और मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ना, आई एम अ ग्रिट गाय, मेहनत गाय. पहाड़ ऊपर है, चढ़ जाएंगे, पैर टूट जाएंगे पर रुकेंगे नहीं, चढ़ जाएंगे. कि मैं विद द फोर्स ऑफ एफर्ट कोई चीज़ पकड़ता हूँ. एंड वॉट हार्दिक वाज टेलिंग मी इज आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट इन टू फोर्स ऑफ इमेजिनेशन. कि मैं इमेजिन करता हूँ और वो हो जाता है. आई एम नॉट पर्टिकुलरली क्लियर ये कैसे हो जाता है. I'd love to talk to somebody who understands the dynamics of this more. मेरे को exactly नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, but पता है क्या, interestingly, if you go back to my episode with Parmesh says something like this. Maybe he said this on the episode or privately to me, I don't remember. He said, प्रखर मैंने एक बार सोच लिया ना, तो अब तो वो हो गया. And I've been trying to see how that plays out. I'm dreaming a dream out loud. My team knows about it. You'll know about it. एंड लेट्स सी कि वो हो गया कि नहीं. बट वॉट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज दैट जब वो ये बोल रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार प्रखर, लाइक योर मेथड हैज मेरिट. इट डज गेट यू फ्रॉम द इम्पॉसिबल टू द पॉसिबल. जो चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही होती वो होने तो लग जाती है. जब तुम धक्का मारते हो ना, वो क्या कहते हैं रश्मि रथी में, जब इंसान चाहता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है. ऐसा एक लाइन है ना, दैट्स समथिंग लाइक दैट. लाइक देयर इज समथिंग टू दैट, बट इट्स टायरिंग. कॉन्स्टेंटली pushing against is tiring, and it keeps your mind occupied on the smaller details of things and the stresses of it, and you don't dream of big things, right? Like you're always caught. And I want to do something that's completely bizarre. In my lifetime, in the 50 years that I live, 60 years, hopefully 100 years that I live, I want to do something that is bizarre. और वो हो सकता है ऐसे ना हो with this force of effort वाले मेथड से. वो हो सकता है चेजिंग से ना हो, और हो सकता है उस डायमेंशन में, उस कॉन्स्ट्रक्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में, दिस अट्रैक्ट डोंट चेज माइट बी अ लेवल 2 ऑफ ऑपरेशन दैट हैपन्स आफ्टर चेजिंग इज डन
you move on to attract mode. But I'll get somebody on this podcast to talk about this more. I want to understand this idea more because I have a instinct कि अभी मेरे को ये समझ आएगा और अभी मैं इसको लगा पाऊंगा, इसको मैं अप्लाई कर पाऊंगा. और bro, if really attracting not chasing makes anyone anything like Hardik, God, you need that in your life. I need that in my life, bro. वो इतना नॉन स्ट्रेस्ड कैसे, वो इतना लूज कैसे है. वो नाचता भी है तो अपनी धुन पे नाचता है, चाहे कोई म्यूजिक बज रहा हो, और वो ऐसा नाचता है कि सब उसको देख के वैसा नाचते हैं. ऐसा क्या एनर्जी पुल है भाई. Legitimately, if I can find a video, we'll put it here, right, where he's dancing to his flow, completely his flow. It's not even with the beat, and everybody's like, I want to do this too. How are you doing this? He'll wear the wackiest clothes. He's walk into place, be like, ये कपड़े आपने कहाँ से खरीदे? And he'll be like, मैं खुद बनाता हूँ, right? Like, there's energy to that, bro. The music he's listening to eventually will sound cool to you. The car he's driving will eventually look cool to you. He just leads in this way, and it's beautiful to look at. And I have a very strong feeling it has something to do with attract, don't chase. I'll tell you about my experiments as I run with it. But I have a good instinct for it. So I end up in LA, or I'm here to see him again after a year. I'm very excited. And the guy has experiences curated for me. We are going to... Bro, LA is a trip. I think New York is home in a way, but New York's nearly not that trip. LA is a wild trip. उसके घर से 15 मिनट ड्राइव करो, और सेंट्रल एलए में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग रहता है. 15 मिनट उसके घर से ड्राइव करो, यू आर एट अ बीच जहाँ डॉल्फिन है. डॉल्फिन है 15 मिनट में. और 15 मिनट ड्राइव करो, तुम पहाड़ों में हो जहाँ तुम हाइक कर सकते हो, जहाँ मौसम ऐसा हो चुका है, गांव जैसे बिल्कुल. यू आर फीलिंग दिस विलेज वाइब, यू आर फीलिंग दिस रिमोटनेस. सो इन 15 मिनट्स you are in an untouched part of nature, and another 15 minutes you are in another untouched part of nature, and in the middle is the most sinful city in this world, where you get all opportunities to do business, where you get all kinds of people to network and make friends with, where you get all kinds of merchandise to be around. LA has its problems, any city does, but the package in theory is beautiful. And this was another lesson I learned about the importance of beauty, something I'd never really understood. I am not... Wait a second. I am not the most aesthetically caring person. मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कमरे के हाल क्या है. मैं जब लास्ट ईयर 2023 में वापस अमेरिका से आया था, उसके बाद मैंने अपनी अटैची खोली थी. वो अटैची खोल के मैंने अलमारी में भी नहीं रखी थी 1 साल. मैं इतना स्ट्रेस्ड और फोकस था एक सिंगल चीज़ पे, इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ तक पहुँचा पाने पे. I didn't care for the clothes I wear. तो अभी भी आप देखोगे मेरे को for some more shoots, I just wear the same thing in different colors. Because I'm not that guy. And I did not understand what hygiene, what beauty, what environmental sanity does to you. Because I remember there's this moment, we've been out all night, right? We've been partying. We come back at 5 a.m. in the morning, we sleep through the day. At about 4 or 5, he says, एक काम करते हैं, let's go watch the sunset. And we are in a park. It's called the Palisades Park. And उसके नीचे you can see the beach. I think Venice Beach नीचे, और सामने in the Pacific you see the sun is setting. It's the farthest point. Well, you have Hawaii, but it's the farthest point. It's the end of the world in some way. And you're watching the sunset in the final spot in this world, right? Sky is orange. Sky is changing colors. You see people are happy cycling around. Dogs are running around. कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं bro, like they're just playing music and other people are just listening in on it. And I'm like, bro, अगर मैं एक ऐसी जगह रह रहा होता तो what would my creative output be? What would happen to my soul? See, we understand this very well. You should be in Bangalore if you're a tech guy. We understand this very well. We understand this very well that you should be in Mumbai if you're a media guy. You should come to a big city if you want to make money. We understand that environment has intelligence in it. That there's something to where you are that dictates who you will be. But India में, and this will offend a lot of people, सफाई का तो कोई स्कोप है ही नहीं. एक टाइम पे चौपाटी होता था, जुहू होता था, बढ़िया बीच. बट हमारे सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि वो नहीं सेन रह पाती वो एनवायरनमेंट. अब जा ही नहीं सकते. और सिर्फ पर्सनल सर्कमस्टेंस ऐसे नहीं है कि लोगों ने कर दिए हैं. इट इज़ ऑल्सो नेचुरल टू सम डिग्री. गर्मी बहुत रहती है मुंबई में एज कम्पेयर टू LA. यू नो, इट कैन बी हॉट. बट माई पॉइंट इज, Indians do not
care about beauty. If they have to care about beauty, they'll go to the Himalayas, and now even that is impossible. क्योंकि नैनीताल के बाहर ही 6 घंटे की लाइन लगी हुई है गाड़ियों की. हो ही नहीं पाता. है ही नहीं कॉन्सेप्ट. है वो धीमे धीमे कमर्शलाइज होता है, खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है. और उसका बहुत डीप इंपैक्ट है हमारी लाइफ में. I was in Mexico right after this, and we were staying in 2 Airbnbs, one of which I mentioned is this huge, उसको हार्दिक पाब्लो विला खिलाता है, बोलता है आप पाब्लो विला में रह रहे हैं हम. ठीक है भाई, 5-6 कमरे हैं, बड़ा पूल है, सामने पैसिफिक है, राइट. ब्यूटिफुल विला that you actually spend money to get, because मेरे दिमाग में खुजली हो रही थी, but he made me spend money for it. In Mexico City, we are in this 4-storied apartment. 4 story का अपार्टमेंट है, और इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइंड, और उसकी क्या कहते हैं जो इंटीरियर्स है ना, पेंटिंग्स लगी हुई हैं एक तरफ, किताबें रखी हुई हैं एक तरफ, बैल्कनी है तो बैल्कनी है ब्रो, उस पर दिमाग लगाया गया है, झूले लगे हुए हैं बैल्कनी पे. The sort of happiness I had waking up was very different. I was like, yaar, I'm excited to even be in the house. Right? And देखो, I'm not saying we can fight all our circumstances in one go. I am also here. I'm going to be in Faridabad, which is the best city in the world. Shout out Faridabad. But I'm also going to be here. But I decided, looking at that I want to change some things about my immediate environment. I want to change what my room looks like, my office looks like, my studio looks like. I want to change those things. I want to change what I look like. I want to add beauty into my life. And I think, एक तो देखो element क्या है? I say this to my family when we are having this discussion about India and the West. I'm like, आप रेड लाइट पे इंडिया पे रुको, आपकी आत्मा आपसे छीन ली जाती है. इतनी गरीबी, वो भीख मांगता हुआ बच्चा आता है, आपके अंदर क्या दया आती है, और दया के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट आती है कि इसको दूंगा तो माफिया ना पकड़ ले जाए पैसा इसका, इसको दूंगा तो कहीं जाएगा भी कि नहीं, कि मैं पैसा दे भी दूं तो मैं कुछ कर नहीं रहा. किसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी रुकती है ना, आपको जो वो द विजुअल्स, द इन्वायरमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत स्कैरी है यार, और बड़ी ब्रूटल है. इंडिया में इंसान मरता है तो नंबर कम होते हैं, इंसान की मौत नहीं होती. इट्स अ स्टैटिस्टिक. It produces a very different kind of population when your environment's like this. And again, I'm saying this without value judgment. मैं ये नहीं कह रहा गरीबों की गलती है. I'm saying ये हालात ऐसे हैं. हम सही गलत पे बाद में जा सकते हैं, बट हालात ऐसे हैं. Nuanced point है. एक there's this meme running around on Twitter, briefly मैंने देखा था, speed running through Google Streets India, और उसमें गेम का चैलेंज ये है कि हम लोग Google Street पे जाएंगे और स्ट्रीट पिक करेंगे. जिसको नहीं पता, गूगल स्ट्रीट पे आप स्ट्रीट व्यूज ले सकते हो, स्ट्रीट्स की फोटो, किसी भी दुनिया की स्ट्रीट की फोटो. और द चैलेंज इज वी आर गोइंग टू डू इट अंटिल वी फाइंड अ स्ट्रीट इन इंडिया दैट्स डर्टी. और सब लोग, लाइक, नो मैटर वेयर यू क्लिक इन इंडिया द स्ट्रीट इज डर्टी. कचरा पड़ा ही पड़ा है. हमसे गरीब देश मेक्सिको, हमसे पिछड़ा देश, इस मामले में हमसे बहुत बेहतर है. छोड़ो अमेरिका से कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी. आई एम टॉकिंग अबाउट there's other countries that are far poorer per capita and overall that do better than us when it comes to creating a beautiful environment. And एक तो इसका productive element है that you behave better, you know, your work is better, you have more things happening for you, you are able to make more money, you know, ये वो capitalistic sense में adding value वाली बात में. But दूसरे sense में there's a spiritual completion that comes with beauty, and you know it क्योंकि आप हिमालयों पे गए हो. You've been to coastal cities where it's pristine and you're like, whoa. जब रात को तारे दिखते हैं ना और pollution नहीं होता, आदमी बहुत ऊंचा सोचता है, उसके सपने लंबे हो जाते हैं. और there is so much power in that. हो सकता है मैं लाइफ के इसी फेज में ये सब कंसिडर कर सकता हूँ. पिछले 2 साल में एस्थेटिक बाढ़ चूल्हे में गई, दाढ़ी बना ली, बहुत बड़ी बात है भाई. दाढ़ी बना के पॉडकास्ट करने बैठ गए, बहुत कर लिया. राइट. देयर इज अ वे इन विच योर एनवायरनमेंट इन्फॉर्म्स योर वर्ल्ड व्यू. इट इन्फॉर्म्स योर इमोशनल स्टेट, योर स्पिरिचुअल स्टेट. तभी आश्रम बनाए जाते हैं, तभी शहर बनाए जाते हैं, तभी हिल स्टेशंस बन जाते हैं. एंड आई थिंक वी कैन ऑल डू विद ब्यूटी. आई थिंक आई कैन डू विद मच मोर ब्यूटी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट.
ठीक है. The second thing is about pleasure, and they're sort of connected because when you're living in this mayavi dunya, pleasure is pleasure. And India में for a couple of reasons pleasure cannot be pleasure. एक तो माहौल बहुत ड्रेरी, बहुत ग्रे और इनसिक्योर है. अभी तो मिडिल क्लास एक्सपैंड होना शुरू हुआ है. एक कोर्ट केस, एक हॉस्पिटल बिल, एक फायरिंग, एक रिसेशन दूर है गरीबी. एक गलती दूर है गरीबी. जॉब पकड़ना भारी काम है, मेंटेन करना और भारी काम है, और छूट गई तो फिर पकड़ना और भारी काम है. राइट. मनी, विच इज द एक्सेस टू प्लेजर in so many ways, is very restricted. And then pleasure is looked down upon because as people get older, they forget that they were young once. बच्चे क्रिकेट ना खेलने पार्क में. अब तो पता नहीं पार्क भी बचे हैं कि नहीं बचे इस देश में, बट हैं, ऐसी बात नहीं है. बच्चे खेल ना ले क्रिकेट, मजे ना आ जाए. घूमने मत चले जाना, दारू मत पी लेना. डर बहुत है. समझ में आता है डर बहुत है, पर डर है बहुत है, और उसका इम्पैक्ट है. प्लेजर इज लुक डाउन अपॉन इन अनदर वे, विच इज people who cannot access pleasure will find spiritual solace in pain. कि देखो भैया हमारी लाइफ तो ऐसी है. And then they will require others. They will exert themselves on others. कि तुम्हें भी प्लेजर ना आ जाए. फिर हम उसको रैशनलाइज कर लेते, देखो बेटा स्पिरिचुअली तो हम सब मरने ही वाले हैं, क्या फ़ायदा है. And I was thinking about it because मैंने पिछले 2 साल बहुत पेन में स्पेंड किए. And one of the things I think I'm very proud about is I'm very okay with pain. Although I have a lot of tolerance for it. And one of the things I realized about myself is that if I'm okay taking on the pain, if I'm okay with how painful it is, then I should also be okay with how pleasureful this is. अगर मैं दर्द को ले रहा हूँ तो मैं प्लेजर को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ. I did this for 2 years. I was like, प्रखर तुम बहुत घूम ले हो, तुमने बहुत दोस्ती यारी कर लिया है, तुमने सब बहुत कर लिया है, तुमने दुनिया बहुत देख ली है. अब काम करो, मेहनत करो, स्ट्रेस लो, आगे बढ़ो, और काम को भी स्ट्रेस में बांध के लो. राइट. एंड आई थिंक इट वॉज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू मेक श्योर यंग प्रखर फोकस्ड. अंडरस्टैंडेबल. बट आई थिंक दैट नीड नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स. आई थिंक आई कैन रिलैक्स. आई थिंक I can enjoy pleasure. I can spend money to buy experiences that give me pleasure. And I think that's fine. I think it's even important. I'll tell you the story I had. I don't think I mentioned it to you guys either. I'm flying back from New York City to New Delhi, and I am stopping at Dubai, and I'm Dubai se transfer le raha hu, and I'm sitting in a business class seat. And this guy walks in, bro. It's like 9 p.m. at night. ठीक है. वो हम फ्लाइट से पहले वो अंदर घुस रहा है, and he walks in and he's looking around the business class like he's so excited. There's this wonder. उसकी आंखों में ना एक चमक है कि भाई ऐसा होता है. और वो चुपचाप जाके अपनी इकोनॉमी क्लास में बैठ गया होगा पीछे, और मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं तो साले बैठा हूँ, मैं इतना खुश नहीं, ये तो सिर्फ देख के इतना खुश है. मैं इस सिचुएशन के प्लेजर को इस लेवल पे रिजेक्ट कर रहा हूँ, उससे मैं इतना अंधा हो चुका हूं प्लेजर से दूर भाग भाग के, कि मैं इस डीप प्रिविलेज ऑफ सिटिंग इन अ बिजनेस क्लास सीट, जिंदगी लग जाती है लोगों की, उसको मैं रिजेक्ट करके बैठा हूं, उसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा. ये तो सिर्फ देख के खुश है यार. ही सो एक्साइटेड अबाउट जस्ट सीइंग इट. देयर इज समथिंग अबाउट प्लेजर दैट ओपन्स यू अप टू वंडर कि और क्या है दुनिया में. देयर इज अ importance that pleasure has in my life. I can't fight that. And I should in fact find a way to include it in my mental map, in my philosophy of life. उससे भागना solution नहीं है. अब आए हो तो जियो ना. जिएंगे भी नहीं क्या? सारा टाइम यही भार उठाते रहें. क्या बोलता है वो, Sisyphus must be imagined happy, कामू बोलता है ना. Okay. And so being in LA, going to places like there's this place called Petit Hermitage, right, which is like a better Soho house. तुम 4 बजे 3 बजे छत पे बैठे हो, फुल मून ऊपर हो रखा है, म्यूजिक चल रहा है धीमा धीमा, खाना मिल रहा है अच्छा, the drinks are great, the people you're interacting with are polite, there's a pool where people are swimming, it's 3 a.m. on a Wednesday, they're complete hedonists, सिर्फ मजे करने आए हैं, एपिक्यूरियन लोग हैं. And instead of guilt letting
stopping you from enjoying this. When you're sitting in a business class seat, they're going to give you लिनन लगा के खाना देंगे तुम्हें भाई, वो टेबल क्लॉथ डाल के 4 कोर्स का मील आएगा. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओहो दिस डजंट, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस, मेरे को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है. एक्सेप्ट करो भाई. प्लेजर इज इंपॉर्टेंट, इट कीप्स यू गोइंग. यू स्टिल आर बॉडी. As much as you're the spirit and as much as you're the mind, you still are body, and it's fine. I realize that pleasure has a role to play in my life, and I'm not going to reject it. And that place and time in my life where I was kind of rejecting it, to focus better, I can relax around it. I can trust myself. Prakhar will do it. He'll be careful with pleasure. एक जवान आदमी अपने आप को भरोसा करने में हिचकिचाता है. From LA, and this is where the thing goes down, right? Like यहाँ पे भाई ट्रिप फट जाती है. ठीक है, तो हम न्यूयॉर्क जा चुके हैं. न्यूयॉर्क में अपने सारे पुराने दोस्तों से सारी पुरानी गलियों में जा चुका हूँ. मैं अपने पास से रिकनेक्ट कर चुका हूँ. मेरे को समझ आ रहा है कि ब्रो फक, लाइफ में तो फेजेस होते हैं. ओ माय गॉड, और पैसा खर्चना इज ओके. ओ माय गॉड, यू कैन रिलैक्स, राइट? एंड देन आई गो टू LA and I met with the spectacle of a man, my best friend, who's like so powerful in his energy. You're just like, whoa, what is happening with you? And he's telling you about attract, don't chase, right? And then you're going to all these experiences where you're not saying no or yes. You're not saying मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सही है, ये गलत है. And I'm rolling with him. I'm experiencing life through him. I experience the concept of beauty. The way Hardik dresses and keeps his house is a sign of beauty. The way him and I sit down at 3 a.m. and talk about our life, bro, लड़के करते नहीं है. हाँ भाई सब ठीक है. अर्पित कहता ना, हाँ भाई सब ठीक है. लोग करते नहीं है वो. That's beauty. The way it inspires you is different, right? I'm going through that, and then I'm going through these pleasureful experiences, profound pleasureful experiences that only money can buy. I'm like, wow, कितना interesting है ये. नशा नहीं हो रहा उसका, but you're like, wow यार, ये पता ही नहीं था ये भी होता है. लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे जीते हैं. We end up in Mexico, and Mexico is a great part of this trip because मेरे सारे best friends, all my best friends are coming on this trip. There is Hardik, we mentioned. There is Jugnu. Jugnu was my roommate in college. वो कॉलेज नहीं जाता था, बट वो मेरा रूममेट था. वो क्या करता था किसी को नहीं पता. वो अभी क्या करता है किसी को नहीं पता, लेकिन वो मज़े बहुत करता है. उस बंदे के पास माँ कसम लाइफ में कुछ भी ना हो ना, उसकी मुस्कुराहट नहीं हटती. ही इज़ ऑलवेज ब्लडी स्माइलिंग. एंड आई वुड से दिस अबाउट हिम बैक इन द डे ऑल्सो. 2018, 19, 20 जब वो मेरा रूममेट था. कोविड में वो मेरा रूममेट था. इतने मज़े आते थे कोविड में, बता नहीं सकता तुम्हें. ट्रैजिक टाइम है. दुनिया में महामारी फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है. हम मजे कर रहे हैं घर बैठ के. टीवी भी नहीं चल रहा, लेकिन मजे ऑन है. विद हिम, इफ ही इज हैप्पी, यू आर हैप्पी. इफ ही इज सैड, द इंटायर रूम इज सैड. ही हैज दिस एबिलिटी टू पुल यू इनटू हिज इमोशन. ही इज ब्रो, वो प्योर है. उसमें ना एक देयर इज अ पावर इन हिम लाइक दैट. बड़ा ही इज वेरी प्योर. उसका इमोशन ऐसे इन्फेक्ट कर देता है तुम्हें. तुम उसके साथ बैठो, तुम्हें हंसी ना आए, तुम क्रेजी बातें ना करो, राइट? Then there is Perry, my older brother. Perry is my older brother. I am who I am in part in this phase of my life because of him. मेरे को याद है this one night, there was this one night where on Mexico we had this whole thing. सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सच्चे हो रहे हैं. बहुत टाइम बाद सब एक दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं. And we're talking about our feelings. Men talking about their feelings. But we're talking about our feelings towards each other in the sense of हम कम मिलते हैं, but I wish the best for you, kind of, right? And I tell him this, I'm like, bro, whatever I have is because of you, man. I would not be half the guy I am if you did not train me like this. उस बंदे ने मेरे को ट्रेन किया, और पता है उसने मेरे को ट्रेन किया मेरे प्लेइंग फील्ड पे आके. Because with him, I would get into philosophical arguments and he would win. And then when he would win, I would have to concede. I would have to accept his point of view. तो उसने ये नहीं बोला प्रखर तू गलत है, मेरी बात सुन. He was like, चल तेरा गेम खेलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ लेते हैं, वर्बली पहुंच जाते हैं वहाँ तक. एंड ही वॉज ऑल्सो माई रूममेट ड्यूरिंग कॉलेज. बट उससे मैंने सीखा अपने लिए खड़ा होना. उससे मैंने सीखा हिम्मत, नोबिलिटी, वर्च्यू जिसे कहते हैं ना, वर्च्यू. सो आई एम विद हिम, राइट? उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है, मेरी गर्लफ्रेंड साथ में है. Jonathan, that's my friend who's at war right now. You know, वो छुट्टी लेके आया था सिर्फ इस ट्रिप के लिए. फ्रैंकली, लाइक ही वाज आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी फॉर अ वाइल, बट वो इजराइल से तेल अवीव से उड़ के आया था छुट्टी लेके.
वो आके पता क्या करता है, जॉनसन लिटरली ही कम्स देयर, दिस गाय लैंड्स इन मेक्सिको, मेरे को एयरपोर्ट में मिलता है, कहता है वैसे हम यहाँ आए क्यों हैं? मैंने बोला इसका क्या मतलब है, घूमने आए? कह रहा अच्छा मेरे को लगा तेरे को कोई काम होगा। वो ऐसा बावड़ा है, वो फ्लाइट पकड़ के 3 फ्लाइट लेके तेल अवीव से मेक्सिको सिटी आ गया, उसको ये पता ही नहीं प्रखर ने बुलाया क्यों है। मैं कह रहा हूँ भाई हमें अपनी ये जवानी है दीवानी टाइप की एक ट्रिप लेनी है, नहीं कौन सी मूवी ZNMD टाइप की एक ट्रिप लेनी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की, राइट? एंड दिस गाय इज लाइक हम यहाँ आए क्यों हैं? एंड आई हैड दिस ब्यूटीफुल मोमेंट विद हिम ऑन द सेम नाइट ब्रो, लाइक व्हेन आई एम जस्ट लाइक ब्रो तेरे को कुछ हो गया ना, मैं तेरे को छोड़ना नहीं है। मतलब he's a brother to me, and I know there's a larger geopolitical conflict at stake, and I don't want to include myself in that conversation at all right now. I'm talking about what a man feels in his private time for his friend. I'm not endorsing a side. I'm talking about the emotion a brother will feel when another is in danger. And you know, John does this one thing. This is what I learned about friendship. John does this one thing where when he hugs you, he does not let go. एक्स्ट्रा लंबी कि मतलब 2 नॉर्मल आदमी उतनी देर हग कर ले तो लोग बोले भाई क्या नो डिडी समझ रहा है? ही स्टेज देयर एंड आफ्टर द फर्स्ट 2 seconds which is customary hugging, in your head all these thoughts pop up that you want to say to the other guy. जब तुम वो extended hug में जाते हो ना, you start thinking of things you want to say to this person. Like I wanted to say to him, you've got to be careful. You just don't. मेरा मन था भाई मत जा यार, क्यों पड़ रहा है यार इन चीज़ों में। भारतीय आदमी यही कहता है भाई पैसे बनाओ साइड में कटो, हम तो उस मिजाज के लोग होते हैं थोड़े। But like I just wanted, I didn't know I had so much feelings there. Like I didn't know कि I have so much concern. Very emotional, very unfiltered, very vulnerable moment spent with him. And I think I have a suspicion and I advise that hug has a huge role to play in it. That extended hug, I do it since, right? I'll just stay there extra 2 seconds, 4 seconds extra, and you'll see that मर्द की toughness melt हो जाती है extended hug में। वो उसके भीतर दबे हुए ख्याल उठाते हैं, right? And something very beautiful about it. Something very, very beautiful about it. There is another friend who actually did not show up on this trip. His name is Ori. And Ori is my spiritual playmate. That's how I describe him to people. He's the only guy who understands me talking about hours worth of spiritual philosophy. He's a psychiatrist. So that's serious stuff. He's a very smart guy. He's read your Oshos and your Ramdas and all this stuff. But more than that, he's also like very comfortable doing tarot. He's also very comfortable in the esoteric and the Jungs and the Freuds. Like he's very flowy guy, very flexible guy, and he can engage with you on all these levels. So he's the only guy I trust when I'm not feeling well here. I call him up, and I think वो ही एक अकेला आदमी है जो मेरे को समझेगा और समझा पाएगा. उससे तो मैं बहुत सीखा, but वो इस ट्रिप पे नहीं था. Overall, what I realized is I want a friend group like this. I have a friend group like this in India. I have a friend group like this elsewhere. But a friend group that aims to do big things in life. A friend group that when it comes together, the emotions are so pure. Because our focus is not internal politics, it's the large beauty of this world. पैसा कमाना, जो कि हमारे देश का एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेट है, चाहे हम माने चाहे ना माने, बेटा पैसा कमाओ, बेटा मेहनत करो, स्टे इन द लाइन एंड डोंट मेस अराउंड. उसका एंड गोल ओवर जनरेशंस आप रियलाइज करोगे व्हेन यू नो इफ you are the first generation making money for your family, you'd want your kids to be happy and experience beauty. The end goal of all of this. The sad part is that generations have to sacrifice themselves in India for people to actually experience what the world is about. Right? And I'm glad I have a friend group like this. Jahan pe the primary motivation is to play. The primary sort of sentiment towards each other is we want the best for each other. We're talking about my newfound success, right? My friends are very impressed with what I've done. And I'm telling them about my doubts because I still haven't learned how to relax and let go. I still haven't understood attract, not don't chase, right? Talking about it, I'm like, oh, but this and this and this. And my friends,
like a couple of them just look at me like, are you an idiot? Like they're so sure of me कि तू तो कर ही लेगा यार, तू इतना क्या सोच रहा है? And I was reminded instantly of the story I've heard from reading about spies and stuff. There was a spy who'd gone to kill Fidel Castro back in the day in Cuba. Female, right? Mind-bending story. Apparently, she writes, I don't know where I read it, she writes, she's sitting with Fidel Castro, seducing him so that eventually she can kill him. And Fidel comes close to her and says, are you here to kill me? And she's like, maybe. And he looks at her, he's like, I don't think you will. And then she says, after that, she was seduced. And she never killed him. She went back on her job duty, her duty towards her country in that case. And she says, he was so sure of me. When he said, I don't think you will, he was so sure of me that I just fell into it. And that's what a good friend will do. They're so sure of you, you'll believe it. Your doubts disappear. Your struggle suddenly seems easier. When I heard that from my friends, and they were like, bro, what are you worried about? You got this. Itna nahi stress karna. Let it be. I believed them. And the funny thing is, I was paying it forward to a friend. One of my other friends is telling me how struggleful his life is. A lot of people's lives in different phases is very struggleful. And I look at him and I'm like, with the same surety in my head, bro, there's no doubt. You'll do it. I almost spoke like, हाँ ये तो तू कर ही लेगा, इसके आगे क्या करना है? And he told me this back. He's like, you were so sure of me. And what a blessing it is to have a friend group like this. In one of my hardest times in life, I have a friend, his name is Shamak. And I remember crying on his shoulder. And he's like, Prakhar, तू पागल है क्या? अगर तू रोएगा तो हम क्या करेंगे? And I'm like, bro, क्या विश्वास है इस बंदे को मेरे पे? हम, जय कहते हैं ना, हम इतने इतने दिलासों में आते हैं. सिर्फ एक दोस्त की वो बिलीफ ही चाहिए रहता है, आदमी का मूड बदल जाता है यार. He starts or she starts seeing the world differently, and having friends like that, what a privilege. What a privilege. And this is what I learned. Cultivate your friends, keep them closer, hug them longer, and have a group that wants to do big things. Have a group that believes in you. It is probably the highest ROI activity you can do in life. But, bro, Mexico was crazy. ठीक है, तो I'll tell you, I'll give you a brief. हम Mexico City land करते हैं. Mexico City से लिट्टा. Mexico City से सीधा एक flight है that's going into Puerto Escondido. Puerto Escondido is this small little, what Goa used to be many years ago, but with rainforest. So it's a small beach town with rainforest, right? और हम वहाँ land करते हैं. We are living in that Pablo villa. It's all us friends. And day one, we go to this beach. And for this beach, you have to climb down about 100 steps. So you climb down, bro, this is wild, listen to this, listen. You have to climb down 100 steps, you get to this beach. This beach is like a cove, ठीक है? इसमें 200-400 आदमी लोग हैं. बहुत funny story है भाई. Anyway, 200-400 आदमी लोग हैं. Funny story काट देना. But 200-400 आदमी लोग हैं, ठीक है? वो मैं बता नहीं सकता कैमरे में यार, सीन हो जाएगा. कहाँ फंस गया दिमाग में भाई. ठीक है, 400 आदमी पानी में नहा रहे हैं बीच पे. कुछ लोग अपनी शैक्स में बैठे हैं, जूसें चल रही हैं, बियरें चल रही हैं, म्यूज़िकें चल रहे हैं, कुछ लोग अपने टिकटॉक बना रहे हैं, कुछ आंटियाँ अपने लाइक वो इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोएँ खिंचवा रही हैं. सब हो रहा है. और जो वेव्स है ना, वो 8, 12, 15 फुट ऊंची वेव्स हैं. एंड द फनी थिंग इज़ कि जो वो बीच है ना, इट ब्रेक्स वेरी क्लोज टू द सैंड. मतलब क्या होता है, जैसे जब वेव आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो नीचे टकरा जाती है ज़मीन से, एंड इट ब्रेक्स, दैट वेव ब्रेक्स. तो अगर आप पानी में 10 फुट भी अंदर चले गए ना, तो वो वेव आपके ऊपर क्रैश नहीं कर रही. आप उस वेव को कूद के निकाल सकते हो. कोई भी आदमी अगर सी में गया है, वो समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ. सो दीज आर ह्यूज वेव्स, बट दे डोंट हिट यू बिकॉज दे ओनली हिट क्लोज टू द एंड ऑफ द बीच. आप थोड़ा सा पानी में अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. सब लोग पानी में अंदर हैं, कुछ लोग सर्फिंग कर रहे हैं. अचानक बरसात शुरू हो जाती है, और हल्की फुल्की नहीं, तेज बरसात. मतलब बारिश हो रही है, पानी में है, वेव्स और ऊंची हो रही हैं, जो सी है वो और वाइल्ड हो रहा है, और कोई पानी नहीं छोड़ रहा. सब पानी में है. और बिजली कड़कनी शुरू होती है, और कर डुर पीछे आवाज आ रही है, एंड एवरीबडी इज इंजॉयिंग इट. एवरीबडी इज लाइक वो. एक सडनली एक 500 आदमी का झुंड बन गया है, जो एक कॉमन एक्सपीरियंस में है.
और वो कॉमन एक्सपीरियंस बड़ा रेयर एक्सपीरियंस है. वी फाउंड आउट लेटर दैट दिस इज एक्चुअली हरिकेन, बट उस टाइम पे हमें लगा सिर्फ बारिश हो रही है. ठीक है, तो एक हरिकेन में हम एक बीच पे 12-15 फुट की वेव्स में 500 लोग साथ में मस्ती कर रहे हैं और बिजली चमक रही है, यहाँ बिजली चमक रही है, वहाँ पापा सुनेंगे बहुत डांटेंगे. ठीक है, बाहर साइड में म्यूजिक चल रहा है, लोग अपना मजे डांस डूंस कर रहे हैं, टिकटॉक चल रही है, सब हो रहा है. ठीक है, अचानक जहाँ हम हैं वहाँ से मे बी 2-4 किलोमीटर आगे, लाइक विजिबल डिस्टेंस, जब बिजली कड़कती है ना तो पहले बिजली दिखती है, फिर कुछ सेकंड बाद आवाज़ आती है और उसमें कैलकुलेशन रहती है कितने सेकंड बाद आवाज़ आई, मतलब कितनी दूर बिजली गिरी होगी. वो इंस्टेंट था. हमारे बहुत नज़दीक पानी में और 500 आदमी हग चुका है भाई, आसपास एक दूसरे को देख रहा है कि ये भी होता है. और फिर वो एंड द इंटायर कोव जस्ट गोज वो, यू कांट हियर द रेन. That is how concerned people are in that cove. They're like, ये क्या देख लिया? Wild experience. You don't think that will ever happen. The next day, Hardik and Clau, actually I don't want to say Clau. The next day, we want to book a yacht tour. Yacht पे जाना है अपने को, ठीक है, कि भाई पैसिफिक में जाएंगे, yacht में बैठेंगे, 10-12 आदमी हैं हम लोग, सब और लोग हैं हमारे दोस्त, वो सब मजे आएंगे. ठीक है. So one of my friends, they booked this yacht tour. अगले दिन सुबह हमें एक आदमी आता है उठाने, हम उसकी गाड़ी में बैठते हैं, हमें लगता है 15 मिनट, हमारी आंखों के सामने तो पानी है, तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे जहाँ बोट होगी. गाड़ी शुरू होती है, 15 मिनट हो जाते हैं, आते नहीं. मेरे को लगा हो सकता है 25 मिनट में पहुंच जाए. 25 मिनट हो जाते हैं, हम बीच पे पहुंचते ही नहीं. आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे बाद मैं रियलाइज होता हूँ बीच तो अब दिख ही नहीं रहा, हम जा कहाँ रहे हैं. 1.25-2 घंटे बाद हम एक जगह पहुँचते हैं विच इज़ लाइक दिस ओपनिंग into some water which is definitely not the ocean. और वहाँ कोई यॉट नहीं है. वहाँ एक बोट है, जो मतलब ऐसी बोट नहीं होती है जो सिर्फ पानी से 3 फुट ही ऊपर होती है, तुम बैठे हो तुम्हें थोड़े से पानी में ही हो, जो मोटर बोट होती है ड्रर वाली, वो वाली बोट है. उस बोट का नाम पता है क्या? आइसिस. हम एक दूसरे को देख रहे हैं भाई कि हम ये कहाँ आ गए हैं, लाइक व्हाट इज दिस. हम तो सोच रहे थे कि हम लोग यॉट पे जा रहे हैं मस्ती करने की, मतलब फुल गाने वाने सुनेंगे, डांस वांस करेंगे, यू नो, वी थॉट दैट्स द स्टैंडर्ड एडवेंचर वी वर प्रिपेयर्ड फॉर. बट we were wrong. We go to this place, we are sitting in ISIS, बारिश हो रही है अभी भी, तो we are wearing plastic bags literally. उसमें हाथ के छेद करके, मुंह का छेद करके प्लास्टिक बैग पहन के बैठे सारे भाई. एंड आई आस्क्ड दिस गाय, like, कितना लंबा टूर है, हम अनजान जगह आ गए हैं, पैसा खर्च दिया है तो टूर तो ले ही लेते. तो कहता भाई 45 मिनट्स लगेंगे बोट में. ठीक है, 45 मिनट्स लगा लेंगे, 2 घंटा ड्राइव करके आए, बैठ जाते हैं. Turns out we were never supposed to be in the ocean. We were supposed to be on a rainforest tour in a lagoon, in a boat. This is not yachts in the ocean. This is not alcohol and techno. This is anaconda and crocodiles and islands. And we set on this adventure without knowing. We don't even know where we are going. We have very little idea of just these guys are showing us islands between a rainforest mangrove. Mangrove होता है ना, देखा है मैंग्रोव वगैरह से, एनाकोंडा पिक्चरों में रहता है कि वो पेड़ है तो पेड़ की जड़ें ही हैं, जमीन है ही नहीं, वो पानी में ही जा रही हैं. उस इन्वायरमेंट में हम लोग स्नेकिंग कर रहे हैं और कोई और नहीं है, दूर दूर तक कोई और नहीं है. There's no one. पापा बहुत डांटेंगे, बट बारिश हो रही है, हम उस बोट में बैठे हैं. वो बोले ये देखो क्रोकोडाइल, वो बोले ये देखो ये एक ऐसा आइलैंड है. हमें एक आइलैंड पे ले जाते, कहते हैं यहाँ सिर्फ 100 लोग रहते हैं, इस आइलैंड तक पहुँचने के लिए आपको 30 मिनट बोट में रहना है, पर यहाँ 100 आदमी रहते हैं. और ये 100 आदमी क्या करते हैं पता नहीं. ये 100 आदमी, इनके पेट्स होते हैं बेबी क्रोकोडाइल्स. आप क्रोकोडाइल पकड़ के फ़ोटो खिंचवाइए और इनको टिप दीजिए. वो हमसे ये कमर्शियल एक्टिविटी करवा रहे हैं. हम कह रहे हैं बेबी क्रोकोडाइल के साथ फ़ोटो. हर आदमी अपने हाथ में छोटा सा एक छिपकली जैसा क्रोकोडाइल, इतना बड़ा, मतलब यू नो इतना बड़ा क्रोकोडाइल पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहा है. हम कह रहे हैं ये भी ज़िंदगी है. मैं उस आइलैंड पर थोड़ा वॉक करने निकलता हूँ, स्कूल है, क्या हो रहा है यहाँ, कैसे, like you are in a rainforest in the middle of an island where only 100 people live, and what is happening, right? Like, where are we? They keep taking us further, and it's beautiful, frankly. It's so unlike anything I've ever seen. You know, you're going through these very dense mangroves and then suddenly coming to openings. They eventually take us to this island, which they say is a private island. और वहाँ पे एक ढाबा है, एक शैक है. उस शैक में हमें बैठाते, कहते अब आप रात तक यहीं रुको, हम रात को वापस चलेंगे. और हम मौजानवे हो रखे, हमें मज़े आ रहे हैं. हम कह रहे हैं ठीक है, रात को चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ सो यूनिक टू बी हियर. एंड द रेन इज़ रेनिंग. आई विल एक्चुअली शो यू सम वीडियोज़ ऑफ दिस. द रेन इज़ रेनिंग, द विंड इज़ ब्लोइंग,
द थंडर इज क्रैकिंग एंड वी आर इन दिस ढाबा, कम्फी, गर्म कॉफ़ी, उनकी लोकल जो डिशेज हैं वो हमें बना बना के खिला रहे हैं, कोई नहीं है। And apparently this is the island where the ocean, the Pacific Ocean meets this lagoon that creates this sort of mangrove area. तो हम लोग, मैं, हार्दिक, जॉनथन, जुगनू, हम लोग सब जाके पानी में बैठ जाते हैं, मस्त चिल, 3-4 घंटे हम पानी में, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, और हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अपेरेंटली रात से पहले निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें नहीं पता रात को निकलना क्यों है, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया व्हाई वी शुड लीव एट नाइट, बट उन्होंने बोला, हमने मान लिया। म्यूज़िक चल रहा है, डांसिंग हो रही है, राइट, लाइक जस्ट अ ब्यूटिफुल टाइम। At about 7 o'clock, 4-5 hours later, the guy comes, he's like, let's go. Okay, let's go. We sit back in the car, in the boat, and it's completely dark. It's dark enough, फिर उसको टॉर्च जला के देखना पड़ रहा है। And I'm like, are you sure you'll be able to do that? हम लोग रोज़ करते हैं। ठीक है, मान ली हमने बात। जवान आदमी कोई भी बात मान लेता है, जवान आदमी दिमाग नहीं लगाता। हम उस बोट में बैठते हैं, and this boat is going back, and they're still like pointing it at, be like, वो देखो crocodile, वो देखो मछली, वो देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। Suddenly they come to a place, they're like, put your hand in the water. And we're like, why? They're like, just do it. And we put our hand in the water and it's bioluminescent. Bioluminescent होता है ना जब वो पानी चमकने लगता है, बिकॉज उस पर कोई एल्गी वैल्गी रहता है। सो इमेजिन जैसे बोट जाती है तो बोट के साइड में ऐसे पानी आता है, यू नो व्हाट आई टॉक अबाउट, राइट? वो जो ड्रिफ्ट क्रिएट होता है बोट का, वो पानी गोल्डन ब्लू कलर का है। एवरीथिंग इज डार्क, बट जो पानी को हम टच कर रहे हैं वो ब्लू कलर में शाइन कर रहा है। हम हाथ डाल रहे हैं, हमारा हाथ ब्लू है। स्ट्रेंज, ब्यूटिफुल। इट्स स्टिल काइंड ऑफ रेनिंग, सो यू डोंट सी द स्टार्स, बट द स्टार्स आर ऑन द वाटर यूर ऑन। वेरी स्ट्रेंज। एंड देन वी कीप गोइंग, एंड यू नो द सर्टन पॉइंट वेयर वी आर एट एन ओपनिंग, जहां जॉनथन उस बंदे को मुड़ के कहता है, वैसे एक बात बताना, ये जगह सेफ है क्या? और वो बंदा पता नहीं किस सेंस में हाँ बोल रहा है कि हाँ ये जगह सेफ है। जॉनथन मुड़ता है और पानी में छलांग, उल्टा हो जाता है पानी में सीधा, goes in the water। और मर्दों की नीयत ऐसी होती है, जब वो अपने एक मर्द को कुछ करते हुए देख लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि भाई ये कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। हम सारे लड़के पानी में कूद जाते हैं। एंड नाउ वी आर इन द वाटर एट लाइक 8 PM in the night. It's completely dark and our bodies are glowing bright blue. These are your college friends. You are in the water with them. There were crocodiles, we didn't think of it. मतलब मेरे को बाद में realize हुआ कि भाई crocodiles भी थे प्रखर, क्या कर रहे हो? But उस टाइम कूद गए। And it's amazing. It's unreal how beautiful it is. I'm like, what a strange experience. मतलब अभी तक हम लोग ऐसा फील कर रहे थे, मैं एनाकोंडा मूवी में, सडनली हम फील कर रहे हैं कि भाई ये कोई साइंस फिक्शन डून ही मूवी चल रही है। What is this? What is this adventure? Something we did not anticipate. We just kept rolling into it. We just kept flowing into it. This is what I mean by like, use the flow of nature as opposed to run against it. Instead of worrying, let it happen. Yeah, you have to be safe. I don't recommend anybody do the stupid things I do. I'm just telling you stories. Right? Warning डाल देना, लोग बड़े सेंटी होते हैं. But I was like, wow. In Mexico City, a few days later, this is towards 25th September, I remember, हम लोग मेक्सिको में बाहर जाते हैं कि we'll go to places like, you know, bars, etc. We are at this bar, which is Mexico City, for people who do not know, is surrounded by mountains, and then it's a huge city like Delhi would be. Just huge. बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, छोटी बिल्डिंग्स भी हैं। हम एक स्काई स्क्रेपर के टॉप पे एक बार में बैठे हैं। उस बार का डिज़ाइन है कैक्टस। सो वी आर सराउंडेड बाय कैक्टस एंड इट्स बड़े बड़े शीशे, और उन शीशों के पार तुम्हें पूरा मेक्सिको सिटी दिख रहा है 360, और उसके पीछे के पहाड़ दिख रहे हैं। And that night, somehow we ended up meeting people and kept rolling until we were chilling at some guy जो नार्कोस मेक्सिको में एक्टर है, उसके घर पे। उसके घर पे हम रात भर पार्टी कर रहे हैं। डीजे, वो लोग ही डीजे कर रहे हैं जिनका घर है, वहीं पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। And I meet this whole wide variety of people there. And what are these adventures? And I'd forgotten about these adventures, being so stressed and focused on work and just so afraid of it. I'd forgotten that there is something about letting go that gets you into adventure, that opens up your spirit like nothing does. It is my private rebellion against aging. That's how I think of adventure. बुढ़ापा सबका आ रहा है, मैं जंग लड़ रहा हूं, मैं एडवेंचरों पे जाऊंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा। दिमाग खुल जाता है, आत्मा खुल जाती है भाई। You come back and you're like, man, wow, ये भी हुआ। इसको कंटेंट में सुनाएंगे कहानी बना के। नो, बट यू लाइक, वाओ ब्रो, व्हाट अ
once in a lifetime experience to have. I often think about this, right? Like I often think about what will I be thinking before I'm dying. And I hope this is the kind of stuff I'm thinking about. I strive to create those memories. I've traveled around the world, legitimately. South America se leke East Asia tak I've traveled. And I've traveled alone. And I've been on really a lot of adventures. Barring the last 4-5 years, I've done a lot of adventures. Nothing comes close. All of those adventures are so strange, I cannot even tell you. Some of these stories I can't even talk about. But, bro. And when I meet people, when I'm talking to you guys, when I'm drawing from experience, I'm drawing from adventures like this. And I realized this was the moment I realized the value of adventure in my life. I'm at a music festival after this in San Diego. 2 din, partying it out with my friends. Great music by the beach in San Diego, which by the way is one of the most beautiful cities in the world. Like if LA is beautiful, San Diego is a different monster. बेहतरीन सुंदर. मेरा एक दोस्त है सैन डिएगो में. मैं हर साल सैन डिएगो जब जाता हूँ उसके पास जाता हूँ. वो एक लोकल पॉलिटिशियन है, शाउट आउट जैफेट. और वो मेरे को पता है क्या करता है. ही टेक्स मी टू दिस बीच टू स्विम जहाँ सी लायंस रहते हैं. बाकायदा सील्स के साथ तुम स्विमिंग कर रहे हो. मतलब तुम तैर रहे हो और बगल में से सील निकल रहा है और तुम्हें डर लग रहा है भाई मेरे को टच ना कर ले, खा ना जाए मेरे को. खाते नहीं है वो वहां शोर कर रहे हैं पूरे बीच पे फुल पावर. और तुम कह रहे हो भाई सील तो मैंने सिर्फ पिक्चरों में और टीवी में देखा है, मैं उनके साथ चिलिंग कर रहा हूं, पानी में नहा रहा हूं मैं सील्स के साथ. भाई कब होता है लाइफ में यार, किसकी लाइफ में क्या ग्रेटिट्यूड भर के आता है यार जीवन के लिए कि फक यार. द ब्यूटी, द एडवेंचर, the pleasure. What a profound experience. It is catapulting me into level 2. It is catapulting me into a different life. And I didn't ask for this. मैं तो सिर्फ, explore कर लेंगे, past से मिलाएंगे अपने दोस्तों से मिलाएंगे करने गया था. But just beautiful. Beautiful. When you're working hard towards a goal, the tools of progress की how far are you in your goal? Are your skills in place? Is your money being made? Your security issues. They're very important, but ये ना एक myopia हो सकता है. आप फंस सकते हो उन चीज़ों में. Adventure, beauty और pleasure ऐसी चीज़ें जो खोल देती हैं. The spectrum opens up wider. And I'm so glad I have a sense of beauty, a sense of adventure, and a sense of pleasure now. And you know what that rolled into is after San Diego, I'm back in LA and I'm texting the surprise guest. I'm texting this guy, right? Actually, I started texting him when I was in LA before Mexico. So it's New York, LA, Mexico, San Diego, LA, right? मैं LA में जब पहले था उससे मैं मैसेज कर रहा था. Eric Weinstein. Eric Weinstein is the reason why I'm on the internet. There's more people, but Eric's right up there. I, in fact, learned how to use language from Eric. And please attribute the good parts to him, not the bad parts, because I use language in different ways. But मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में था and you're experiencing a lot of wokeism at Columbia University, I didn't know how to make sense of it. हम तो भाई देसी हैं, हम तो फरीदाबाद, तिगांव, बल्लभगढ़, यहाँ से हैं हम. तुम वोकिज्म क्या चेप रहे हो हम पे समझ नहीं आ रही. तो आई वॉज लिसनिंग टू लॉट ऑफ दीज गाइज. आई वॉज लिसनिंग टू जॉर्डन पीटरसन, जो रोगन, एंड एरिक वॉज ऑन रोगन्स शो क्वाइट अ लॉट, एंड ही वॉज डिबेटिंग और डिस्कसिंग और engaging in ideas with Peterson quite a lot. And I always found Eric to be some of the smartest utilization of language ever. He's a brilliant political commentator, a brilliant social commentator. He is PhD in 3 subjects, all hard science. I think he's a PhD in, well, economics is soft, but economics, mathematics, and physics. He's a PhD in 3 things. And I think the last I knew what he did exactly is that he ran Peter Thiel's Thiel Capital, the venture capital fund or the investment fund. And so the guy works in investment. He's trained in hard science and economics. And then he is known for being a social and political commentator. And I'm complimenting his use of language. Imagine. When people ask me who Eric is, when sometimes my family, I'm like, I'll have to give you, sit down. I'll tell you a story. I remember a specific conversation Eric had on Dave Rubin's podcast back in the day where I think Ben Shapiro and Jordan Peterson and Eric were on the show. And I saw him just use language like a beautiful weapon. Not brutal weapon, not destructive weapon, constructive weapon. I learned how to represent the other side properly in an argument from Eric. And just countless other things.
And so I was in LA and I was casually texting him in his DM. I was like, hey, I'm in LA. I'd like to meet. I'd like to get a picture click. Can I meet you for 15 minutes? And somehow it accidentally happened. And I'm sitting across from him in a coffee shop with some of my friends. And I'm just like, whoa. Right? That conversation lasted 2 hours. I have a distinct memory of a moment where I made a point. I gave an argument. I put an idea on the table and he was like, good idea. And I was like, क्या बात अंदर मतलब मन के अंदर आती कह रहा है मैंने good idea, like you know you're being acknowledged for being powerful by your hero. Damn, let's be real. And I'm like ये तो मैं argument ही खा जाऊंगा, ये तो मैं अब तो मैं खुश हो गया. There's a few moments like this that happened on this trip. I remember I was in San Diego. I was done partying. My dad calls me up in the middle of the night and he'd seen me on Abhijit Chavra's show. And seen me talk about ideas of power, philosophy and psychology. And my dad's like, I am impressed. And I was like पूरी जिंदगी लग जाती है मर्द को अपने बाप की अप्रूवल छीनते छीनते. भाई मेरे पापा ने दे दी. कह सकते हो मेरे काम ने कमा दी. कह सकते हो भगवान के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, मेरी दादी के आशीर्वाद ने कमा दी. But bro, what the hell? Who would have thought while I'm on a vacation this would happen, right? So I meet Eric, we talk about it, and then somehow in the conversation an idea to do a podcast shows up where we want to discuss Osho वाली बात है conversation में. Osho पे हम आए थे conversation में. I don't know. Maybe not, right? We wanted to discuss Osho. We wanted to discuss India. Eric has a deep association with India in many ways. We wanted to discuss current geopolitical events and so on, and we decided to do a podcast. But मैं चला गया मेक्सिको, फिर नहीं हो पाया. अचानक मैं वापस हूँ 1-2 दिन के लिए LA में, and I text him and it happens. And we have the most satisfying conversation I've ever had on this show. It's in English. The language is undiluted. I refuse to make it stupider. It's a very interesting conversation. We definitely talk about Indian culture in the sense of art. Not like vaguely Indian culture, but like specifically Indian music we talk about. We discuss tabla and sarangi deeply, right? We talk about the Middle East and what is happening there and what he thinks about that. We talk about how the West, the Anglosphere, the English-speaking world and India will come to interact in the future or are interacting today. And you know this common question that I keep talking about, that I keep getting from people, how do Americans perceive or how does the West perceive India? We talk about that. We talk about the power of what we are building, you and I are building here. That's insane. And it opened my mind up to a barrage of different ideas. I come to talk about as we go on this journey together, as we continue talking. By the way, I talk solo after every episode if you haven't. Har episode ke end mein ab se there's going to be a solo chat where we talk about things. But the thing with Eric is I got a conversation of 5 hours, maybe more, with my hero from just shooting my shot. And with talking to him, the podcast is going to be out in a few days, but with talking to him, something occurred. I felt like I was playing the game I want to play. It's very hard to explain what I mean by that. मेरे को ये लैंग्वेज आई उसके बाद कि ब्रो कुछ फिट फील हो रहा है, ये करना है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचानी है. मैं पहुंचा सकता हूं, मेरे पास वो ग्रामर है जो बाकी देश समझते हैं. मैं तो ट्रेंड हूं ना उनकी ग्रामर में. इंडियन ग्रामर तो मैंने फिर सीखी है. मेरे पास वो इंटरेस्ट है, मेरे बोलने का तरीका फिट होता है. आई वॉन्ट टू बी डूइंग दैट. आई वॉन्ट टू बी टॉकिंग टू मोर पीपल लाइक हिम. I want to be bringing them on my show. I want to take the force of the Indian discourse and smash it against the global discourse and see what that produces. I think we are ready. We are a very mature population at this point, at least intellectually. We are having conversations that, damn, they could learn from, man. I'm not talking about Eric. I'm talking about the world. And I want to find a way to do that. And so, the episode's going to be out in a few days. I want you to do something for me. Go watch it. Put your comment. Let Eric know in his mentions on Twitter, in his DM on Instagram, or like his DM on Twitter. Let him know if you enjoyed the conversation. Get the feedback across to him. Comments, views, DMs, mentions. Let the feedback go to him. Please.
It's very encouraging. It will help me accelerate this. And if you want to see more of this, bang on. Then we are aligned. Watch that podcast. Tell me what you think. ये तो Eric की side होगी. Tell me what you think. We are on to something here. You and I. And we're going to do it. I'm hoping. Okay? I'm hoping. And finally, I remember this happened. Finally. After this entire 35-day worth of emotional ups and downs, whether that be with friends, family, personal heroes, whether that be with adventure and beauty and pleasure and money and the past and the future and your own mind, and all of this is done. I'm having this moment as I'm beginning to descend back into my work life. I'm like, you know what, Prakhar, you've done 20s very well. You've managed to find a way to explore your curiosities. You managed to meet enough people. You managed to... 20 is a different time. You don't really have a lot of money. You don't really have a lot of experience. You're figuring stuff out. So you're okay with compromising on quite a bit. But your 30s are very different. And I need an orientation. I'm going to be married at some point. I'm going to have kids at some point, which is going to happen in the next 11 years. It's a very different life from when I was 20, single, just being like, oh, yo, what's up? You want to go party? That's not the guy I am anymore. I don't have the energy to drink and wake up hungover. I don't have that anymore. I don't want to do that. I enjoy my work quite a lot. That gives me pleasure like nothing does. Pleasure is not just experiential pleasure. It's also this deep satisfaction of building something beautiful, something you're proud of. But fundamentally, there needs to be a shift in my 30s. And I started writing this document about what success means in my 30s. But it has things like focus on beauty, build intentfully, have your surroundings be built intentfully, focus on your health. In your 20s, you can be less careful about your health. In your 30s, you're setting the tone for your middle ages. And your health needs to be on fleek. As you are getting more successful and prominent, you cannot be brashly introducing yourself to people as loudly as you did before. You are not a nobody who has to earn social credit. You have to flow into social credit. And your appearance and your environment will dictate that. बड़ा different idea. पहले मैं और भाई hello आप कैसे हो? Now I have to learn to carry myself कि लोग the interactions happen instead of forcing those interactions. I'm not boy Prakhar. I'm man Prakhar. And your behavior has to change because of that. And so I wrote this document out. There's many points. Actually, let me pull it up. Let me see if I can pull it up right now. Yeah, living in my 30s. That's what it's called. Intentful appearance, focus on health, successful first career. Have a successful first career in your 30s. Because I believe in several careers. Make your experiences richer. Not just in terms of things that you learn, but in terms of the spectrum of things that you experience. That means spending money behind it. It's not just... think about what you want your married life and your family life to be like. It's a very active thing I'm writing about. How do I want my married life to look like? What do I want my kids to learn? Where do I want them to grow up? My relationship with money has to change. I have to think of money as an investable resource rather than कहाँ अय्याशी में उड़ा सकते हैं, कहाँ मज़ों में उड़ा सकते हैं पैसा. तो जब आप कॉलेज में होते हो आप कहते हो भाई जाके डिगिन में खाना खाएंगे, पैसा आता है जेब में, जब पॉकेट मनी आती है. It's not the same when you're 30. And then on some level I'm also exploring what God means and how I want my relationship with God like. It's been an insane experience. This trip has given me so much more than I thought. I'm very happy for it. And yeah, find yourself stuff like this. Keep watching. I hope you've enjoyed this. Guys, make sure you subscribe, like, do all that good stuff. Mention in the comments. Go watch Eric's podcast. Great podcast. मैं बता रहा हूँ. And yeah, I'll see you around, man. Thank you so much.